Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Genetics and this is your lecture number 39. आज lecture में continue करना from the DNA repair mechanism. Last class रे DNA repair mechanism हमें start करते ना जिन्हें कि हमें discussion करते ना about the base excision repair. जिनटा कि nitrogenous base, unusual nitrogenous base जो दी join है जिसे DNA रे how it is removed by different kind of enzymes तार बाबत रे discussion करते ना, right? As we have discussion karma another method of DNA repair mechanism, that is the nucleotide excision repair. Okay, so what is that nucleotide excision repair and when this nucleotide excision repair is occurring, that we have to discuss. Okay, so as we have discussion karma nucleotide excision repair. Nucleotide excision repair. What is that nucleotide excision repair? Okay, nucleotide ro excision kara jiba unusual nucleotides, or if there is some problem related to nucleotides रे जदि किछि problem है total nucleotide के हमें केंदा करी बाहर करो सो. Okay, we are not removing this is done by the DNA itself. ताके को सो nucleotide excision repair, how it is occurring. Okay, so देखो due to UV radiation, ultraviolet radiation रो लागी, due to UV radiation there may be chances of formation of thymine dimer in DNA. DNA रे काना फॉर्मेशन होबार चांसेस होचे कहला थाइमिन डाइमर माने काना देखो जे DNA रो गुटे स्ट्रैंड रे पाखर दुईटा एडजस्टेंट थाइमिन रो भितरे सेम स्ट्रैंड रे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जासी ताके क्वेश्चन थाइमिन डाइमर. व्हाट इज द थाइमिन डाइमर? देखो डायग्राम काटी देले यू विल क्लियर अबाउट दिस. सपोज हमर एटा DNA अछि. Okay, and here what happen गोटे रीजन रे काना होचे देखो ई रीजन रे इनो गोटे थाइमिन अछि and here also one thymine is there. Okay, and जगह रे तार एडजस्ट तार फ्रंट रे एडेनाइन माने अच्छा, but here what happen this thymine they make hydrogen bond with the another thymine. Okay, सेम स्ट्रैंड रे थाइमिन भितर काना फॉर्मेशन हो जाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाय. So this is occurring due to which radiation? That is due to ultraviolet radiation. When ultraviolet radiation that fall on the DNA that make formation of thymine dimer, इता के कहूछु इस स्ट्रक्चर के कहूछु हमें काम लिख रे thymine dimer बोली के कहूछु. Okay, and this part that is also called as DNA lesion. ये रीजन के हमें काना कहसु DNA लेसन बोली करी कहा जाय. ओके, लेसन रो माने ला जदी इंजुरी हेतिबा ताके लेसन बोली करी कहा जाय. तो इनो DNA रो वन काइंड ऑफ कान हला DNA रो इंजुरी हला. ओके, एंड इ जगह रे काना फॉर्मेशन हला थाइमिन डाइमर फॉर्मेशन हला. बेसिकली थाइमिन डाइमर यूवी रेडिएशन जदी DNA ऊपर पडुचे रिपीटेडली और ड्यू टू more intensity of UV radiation जदी पडुचे there may be chances of formation of hydrogen bond between the two adjacent thymine. दुईटा adjacent thymine भितरे hydrogen bond जदी formation हेगला then that there may be chances of formation of this dimer ताके कहउछु thymine dimer बोली करी कहउछु. So DNA repair mechanism, nucleotide excision repair mechanism रे कान हबा these two nucleotides will be removed. ये दुही न्यूक्लियोटाइड काना हेबे रिमूव हेबे एंड से जगह रे अमर काना दरकार देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होबा. राइट, सो हाउ इट इज पॉसिबल? लेट्स सी दिस mechanism of this DNA repair. So what happen? For this process there is requirement of some enzymes. For nucleotide excision repair, for nucleotide excision repair
न्यूक्लियोटाइड एक्ससिजन रिपेयर लगी हमको काना दरकार दुईटा एंजाइम बेसिकली दरकार टू एंजाइम्स दैट इज इंपोर्टेंट एंजाइम्स दुईटा दरकार one is called as UVRB and another one UVRC enzyme okay UVRB enzyme दरकार UVRC enzyme दरकार अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन रो लगी जेन डीएनए रे लेसन हेची ओके और डीएनए रे जेन थायमिन डाइमर फॉर्मेशन हेचे ताके रिमूव करबार लगी जेन एंजाइम असला दुईटा टाइप रो एंजाइम हमको दरकार होचे वन इज UVRB and UVRC enzyme दरकार so what happened to this UVRB and UVRC enzyme but this enzyme that is the important enzyme ये एंजाइम टा हमर काना important enzyme है okay but UVRB enzyme that will help this UVRC enzyme this one that is the helping enzyme का हला जे helping enzyme है देखो main enzyme or important enzyme होची UVRC will comes to bind with the thymine dimer and it will make a cord in that thymine dimer region के जीवा UVRC काना करबा सतके कट करबा thymine dimer region के but UVRC enzyme cannot able to bind with the DNA रो से जन thymine dimer region से डायमंड डाइमर रीजन के UVRC एंजाइम जाइकरी बाइंड करी नहीं पारे सतिर लगे व्हाट हैपेंड दुईटा मॉलिक्यूल्स ऑफ UVRC एंजाइम दे विल बाइंड विद द UVRB एंजाइम एंड UVRB एंजाइम काना करबा UVRC एंजाइम के नेकरी काना करबा थायमिन डाइमर रीजन रे पुट करबा देखो काना है बात ओके दुईटा मॉलिक्यूल ऑफ UVRC रो दुईटा मॉलिक्यूल्स ओके इमाने कहा काना करबे दे विल बाइंड विद द UVRB एंजाइम ओके ये दुई जना काना हेबे बाइंड करबे कहां से बाइंड करबे UVRB एंजाइम से ओके UVRC एंजाइम दुईटा ओके UVRC एंजाइम दुईटा molecules two molecules of UVRC enzyme they will bind with the one molecule of UVRB enzyme then what will happen UVRB enzyme काना करबा UVRC enzyme के नबा ट्रांसफर करबा केन रीजन के it will transfer this to the site of thymine dimer region suppose this one that is the thymine dimer region हला okay so this structure will come here total structure but ई दुई UVRC enzyme के का निकरे थ्रीबार अच्छे काम कहार that is the UVRB enzyme रो काम UVRB enzyme रो काम हला जे दुही UVRC दुईटा के निकरे के पुट कला ए जगह निकरे जॉइन कराला के that is your UVRB enzyme तो UVRB एंजाइम रो काम है ट्रांसपोर्टिंग कहा के ट्रांसपोर्ट करबा UVRC एंजाइम और UVRC एंजाइम रो दुईटा मॉलिक्यूल के राइट इस जगह रे काना करबा UVRC एंजाइम रो काम हला जे दैट विल मेक ए कॉट हियर इनो काना थिला थायमिन डाइमर थिला इस जगह रे हमर काना थिला थायमिन डाइमर थिला ना तो थायमिन डाइमर रीजन जन थिला से जगह रे काना करबा इस जगह रे काना करबा गोटे कॉट फॉर्मेशन okay इस जगह रे काना करबा गोटे कट फॉर्मेशन कर दबा इट विल मेक ए कट हियर okay so that you can see this zoom करी जी देखमा how it is looking okay तो इस जगह रे हमर काना हैला जे this region that will cut here ई रीजन टा डीएनए रो सेपरेट हे जेबा राइट तापरे अभी आसबा हमर के हेलिकेज एंजाइम इ जाय के नेक्स्ट आसबा केन एंजाइम हेलिकेज एंजाइम ओके हेलिकेज एंजाइम काना करबा इ हाइड्रोजन बॉन्ड मान को ब्रेक कर दबा राइट ये हाइड्रोजन बॉन्ड मान को जेतले ब्रेक कर देला ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू थायमिन के ब्रेक कर देला
देन आमर जने पर्सन रहला एतकी पर्सन राइट ई अनयूजुअल जेन पेयरिंग हेतिला ई काना हबा नाउ दिस विल बी रिमूव्ड ई काना करबा एबे सेपरेट हे जबा देखो ओके एबे हमर ई पार्ट ता काना हे गला दैट पार्ट विल बी रिमूव्ड इनथिला थाइमिन ओके दिस पार्ट विल बी रिमूव्ड तो एबे हमें जदि देखमा स्ट्रक्चर हाउ इट विल लुक नाउ एबे हमर डीएनए केनता दिसबा नाउ इट विल जस्ट लुक लाइक दिस okay so in our thymine dimer jen thila that thymine dimer is not now that is removed ये कला that is UVR C enzyme two molecules of UVR C enzyme कहर संग असले UVR B enzyme संग असले इन पार्ट के रिमूव कर देले तो suppose this one that is your 5 prime 3 prime then this will be your 3 prime this will be your 5 prime this will be your 5 prime this will be your 3 prime एबे असबा क्या that is your DNA polymerase 1 enzyme एबे असबा the important enzyme that is your DNA polymerase 1 DNA polymerase 1 enzyme will come here okay and DNA polymerase 1 enzyme रो काम काना DNA polymerase 1 enzyme रो काम हला जे DNA polymerase 1 enzyme एबे काना करबा इनो नुआ न्यूक्लियोटाइड्स माने काना करते जबा जॉइन करते चलबा न्यू न्यूक्लियोटाइड्स माने जॉइन कराबा एक्चुअल नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स एबे जॉइन कराबा ओके सो दैट we will get the new DNA here okay and केनता करी न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन करासे that we have discussed here last class रे डिस्कशन करी थिला हमें केनता करी नुआ न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन करासी तार बाबत रे ऑलरेडी हमें डिस्कशन करी थिला so that here new nucleotides will be joined by the DNA polymerase 1 DNA polymerase 1 काना करबा नुआ न्यूक्लियोटाइड्स इस जगह रे एबे जॉइन करला okay but last के हमर काना हला last के there will be a gap is an gap this which तुमको okay is an gap this gap will be maintained by another enzyme okay that is called as your ligase enzyme एबे जाके की आसबा ligase enzyme आसबा okay last के असला की that is your ligase enzyme and ligase enzyme काना करबा इ जगह रे काना करबा सील कर दबा इ रीजन रे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कर दबा okay now we will get the new DNA एबे हमको इटा मिल गला this is your repair DNA जेन DNA टा रिपेयरिंग दरकार थिला से DNA रो रिपेयरिंग हे गला थाइमिन डाइमर फॉर्मेशन हेतला थाइमिन डाइमर इज रिमूव्ड okay and how it is removed by the help of an enzyme that is the UVRC enzyme and another one that is your accessory enzyme that is your UVRB enzyme UVRC enzyme दुईटा molecules असले ताके धरि के असला के UVRB enzyme and से जगह रे समान से ताके रिमूव कराले तो इना न्यूक्लियोटाइड्स पूरा रिमूव हला लेट्स सी हियर दिस वन दैट इज द न्यूक्लियोटाइड पूरा दुईटा रिमूव हला दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज व्हाट न्यूक्लियोटाइड एक्ससिजन रिपेयर इ जगह रे न्यूक्लियोटाइड्स मान को रिमूव कर दोछु सेतिन लगी तके कहूछु न्यूक्लियोटाइड एक्ससिजन रिपेयर बोली करी कहूछु ओके वेरी सिंपल कांसेप्ट आजरी कांसेप्ट बहुत सिंपल थिबा बहुत शॉर्ट रे हमरी कांसेप्ट सरी गला एतर डिटेल नोट्स हमर हैंड रिटन नोट्स अछि ओके हमर जन हैंड रिटन नोट्स रे जेनेटिक 1 एंड जेनेटिक 2 अछि जेनेटिक 2 जीवो से जेनेटिक 2 रे हमर म्यूटेशन रा परे परे हमर डीएनए रिपेयर मेकानिज्म अछि फर्स्ट बेस एक्ससिजन रिपेयर मेकानिज्म थिबा तापर न्यूक्लियोटाइड एक्ससिजन रिपेयर मेकानिज्म थिबा तापर आउटे अछि दैट इज द मिथाइल मिसमैच रिपेयर वाली की गुड अछि okay so one by one you can go for that and detail notes also you can write that right तो तुमको जदि लॉन्ग क्वेश्चन आसे what do you mean by DNA repair mechanism write a notes on DNA repair mechanism you can write any two of this okay last class रे हम डिस्कशन वाला बेस एक्ससिजन रिपेयर एंड दिस वन दैट इज योर न्यूक्लियोटाइड एक्ससिजन रिपेयर दुईटा लिखले भी चलबा okay जदि तुमको टाइम थिबा दुईटा लिखबो जदि टाइम नै न then you can write any one of this right तो इटा गला हमर काना दैट इज योर न्यूक्लियोटाइड एक्ससिजन रिपेयर नेक्स्ट क्लास रे वी विल कम विथ अनदर न्यू टॉपिक okay I think you all will enjoy this session if any doubt you can write to us our chat box is open for all of you that is 24/7 hours that is open okay thank you we will discuss this another
topic in the next class. Thank you.